Hello guys, hello. Welcome to Unacademy YouTube channel. And today we are going to discuss about numerical techniques in mathematical physics. So this topic, very important for your examination. So we'll try to cover this topic, and you can expect one question from this particular topic. That is why this topic is very important. Okay, so we are about to start our class very soon. Let the students join with us, then we'll just start our class. Okay. Okay, so without any further delay, we can start our class. So in the upcoming days also we'll be taking some classes which are very important for your NET exam. Basically we'll be covering topics from part C, and today's topic is numerical techniques in mathematical physics. So my name is Sahin Sorifi, and I am a PhD research scholar at IIT Delhi. This is our referral code PhysicsHub. In case you want to join our Unacademy Plus classes, you can join using that. This is my profile on Unacademy. You can just search my profile using my name, Sahin Sorifi, and you will get my profile. Once you visit my profile, you will see this is the upcoming course. Okay, so a practice booster course for GATE 2021 is coming. It's basically a 3 months batch course. So you can join this course. This course is going to help you a lot for GATE 2021 preparation. Okay, I will be taking most of the classes, and other than that, Home Sir and Nelly ma'am will also take few classes. Okay, and these are some ongoing plus classes on Unacademy. So I take classes at night from 9 p.m. to 10:30 p.m. So currently these two courses are going on. Complete course on quantum mechanics, I take it on Monday, Tuesday and Wednesday, and revision course on physical sciences, I take it on Thursday, Friday, Sunday. And other than that, if you take Unacademy Plus subscription using our referral code PhysicsHub, you will get other courses like detailed course on condensed matter physics, practice course in physical sciences, and crash course on the most important topics of physical sciences, capsule course on STR, and many more classes. So without any further delay, let's just start our class. Is everything fine? Just let me know if everything is fine, then we can start our class. Physics. Should I start? Everything fine? Audio, video, everything is fine? क्लियर है ना? आवाज अभी भी आ रहा है क्या? आवाज आई डोंट थिंक आवाज आना चाहिए अभी. ओके, सो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास. सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विथ टू definitions of equation. So there are two types of equation. One type is transcendental equation. Okay, transcendental equation. What are the transcendental equations? So any equation which involve algebraic function as well as another function is called transcendental equation. Okay, so if you have a function f of x that contains both algebraic and other types of function, then the equation is called transcendental equation. Okay, so this type of transcendental equation is solved using this numerical techniques. Okay, just as for example, I can give this example like x equals to tan x. So this equation cannot be solved analytically. You have to take up some graphical method or numerical method. So it can be solved using either graphical method or numerical method. Okay, that is why it is very important to know about the numerical techniques.
You must have seen equations in single slit diffraction and many other places, that there are some equations which are not easy to solve using our conventional method. You need to take up graphical method or numerical method to solve them. Other types of equations are polynomial equation. Okay, polynomial equation. Polynomial equation. What is polynomial equation? So if your function f of x contains only function of x, okay, contains only algebraic function of x, algebraic functions of x, then the equation is called polynomial equation. As for example, we can write this in this way: x cubed minus 2x square plus x equals to 0. So this is one of the example of polynomial equation. So basically we'll be focusing on these transcendental equations, and these equations are used to are solved by using numerical methods. The first technique which we are going to discuss is basically your Newton-Raphson's method, okay, which is very important. ओके, अभी बहुत बैकग्राउंड आ रहा है क्या? अभी भी कीर्ति बैकग्राउंड क्यों आ रहा है? ओके, जस्ट लेट मी क्लोज द विंडो. Guys, sorry for the inconvenience. So we can start Newton-Raphson method. बदमाश बच्चे सब खेल रहे हैं. The first method which we are going to discuss is Newton-Raphson method. What do we get in this method? So basically using this method we can find out roots of some equation. Okay, so firstly we take some approximate root. So let's say if x equals to x naught, b and okay, so let's f equals to x naught, be an approximate root of the equation. So let's say we have an equation f of x equals to 0 and we have to find out the root. Now we do not know the exact root, so we are taking an approximate root. So that root is x equals to x naught. Now if x equals to x1 is the exact root, then if this is the root, then it should solve it should satisfy this equation. Then what we can write f of x1 equals to 0. Okay, and remember this thing, that if that is the root, then the difference between the exact root and the approximate root will be very small. Okay, it will be very small. So we can just take it like this. So x1 exact root equals to approximate root plus some small difference h. Okay, so we can write f of x1 equals to f of x naught plus h. This should be equals to 0. Okay, now we can expand this in Taylor equation, expand this function in Taylor's equation, in Taylor's theorem. Using Taylor's theorem, if you expand this expression, you get f of x naught plus h by 1 factorial f prime of x naught plus h square by 2 factorial f double prime of x naught plus dot dot dot, and it will be equals to 0. Now look, h is very small because the difference is very small. So h is very small, so higher power of h can be neglected. So we can write
f of x naught plus h into f prime of x naught is approximately equals to 0. We can ignore this higher order of h. So h square by 2 f double prime x naught is neglected. And from here we can find out the value of this small variation h. H equals to how much? Minus f of x naught upon f prime of x naught. And what is this h? H is the difference between the exact root and the approximate root. And if x1 is the exact root, now we can say if we take if we started with this x naught, now we know the value of h. So that means we know the value of the exact root. So what is the value of the exact root? That is x naught plus this one. Okay, so our value of the exact root, so this is the exact root. Exact root क्या हो गया आपका? x1 plus x naught plus h. H is minus f of x naught upon f prime of x naught. Okay. Now what happens if f of x1 not equals to 0? We took x1 to be the exact root. Now suppose x1 f of x1 is not equals to 0, then we have to find out. Then we'll iterate the process. Then we'll find out x2, which is given by x1 minus f of x1 by f prime of x1. It's like this. This is your goal, exact root. This is your goal. Now we have started with x1, x naught. Now using x naught, you are finding x1 and see whether it is reaching to this exact root or not. If it is not reaching, you are further iterating the process and you are slowly trying to get to this exact root. Okay, so this process will continue until and unless you get f of that value to be 0. Okay, which is a basic definition of root. So we can continue this process up to n times until and unless we get the exact root, and we can write for the common case x of n plus 1 equals to xn minus f of xn upon f prime of xn. Okay, so this is the mathematical form of Newton-Raphson formula. This is the mathematical formula for Newton-Raphson method. I hope it is clear. This is very easy. Now if it is clear, then we can go for some example. Just let me know if it is clear. Good evening, Himanshu. Any question from this Newton-Raphson method? So if there is no question, we can move forward to some question. Is it clear? Just let me know. Or if you have any question, you can ask. So I think there is no question. So let's solve this question in finding the roots of the polynomial f of x equals to 3x cube minus 4x minus 5 using the iterative Newton-Raphson method. The initial guess means x naught. Initial guess is taken to be x equals to 2. In the next iteration, its value is nearest to. You are given 4 options. First option 1.671, second option 1.656, third option 1.559, fourth option
1.551. Just solve this question and let me know the answer. You can just comment down your answer, and once this is done we can move forward to interpolation. Okay, so we have to cover as many process, as many techniques as possible, so just quickly do it. This question came in CSIR-NET June 2016. Okay, this is a question of June 16. Solve it quickly and just let me know the answer. मरियम बी मिल रहा है मरियम को, बाकी लोग. So your fx is given 3x cube minus 4x minus 5. Okay, and your initial guess is given to be 2. So we may require to find out a prime x. So a prime x is 9x square minus 4. So let's say xn plus 1. This is the formula we know, xn minus f of x n by f prime of xn. Okay, so initial guess is x equals to 2. So your x1 x naught is 2. We have to find out x1. x1 equals to x naught, okay, minus f of x naught upon f prime of x naught. So x naught equals to 2 minus f of x naught is 3 into 2 cube minus 4 into 2 minus 5 upon f prime of x1 means 9 into 2 square minus 4. Okay, and this will give you 2 minus 3 into 8 minus 8 minus 5 upon 9 into 4 minus 4. कितना आएगा ये? 11 by 32. So this is approximately 1.656. So approximately it is 1.656. So it is matching with option B. So I think it is clear to everyone. Yes, Venu, I am fine now, slowly recovering. It's fine. So हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो है आपका टेक्निक इंटरपोलेशन की तरफ. ओके, शुड आई मूव फॉरवर्ड? जस्ट राइट वाई इफ इट इज क्लियर. Ankush, repeat. So look, this is the formula we know. xn plus 1 equals to xn minus f of xn by f prime xn. This is the original formula. If xn is the approximate root, xn plus 1 is the basically the more exact root. Okay, like let's say if 3 is the root, exact root, let's say 1 is your x0. Okay, this is the approximate root. So using this value of 1 you can find out x1. let's say that is 2. so 1 से 2 मिला. now अभी एक और इटरेशन करोगे तो आपको x1 से exact root 3 मिलेगा. it's like that, but in this question it's like this first root is given and you have to ask to find out the next root, and this is the formula to find the next root from the previous root. xn is given, you have to find out the next root which is closer to the exact root, which is xn plus 1. Okay, is it clear to everyone? Calculator is not allowed, Gurpreet. You have to do it by your free hand. Okay, आपको ये खुद करना पड़ेगा इसको. ये सब न्यूमेरिकल टेक्निक्स में कुछ कैलकुलेशन आपको खुद अपने हाथों से करना पड़ेगा. No calculator will be allowed. So I hope it is clear, Gurpreet.
and who asked? अंकुश. ओके, सो हम लोग इंटरपोलेशन पे चलते हैं. इंटरपोलेशन इज बेसिकली एक चीज है, मतलब आपको एक टेबल दे रखा है, टेबल में कुछ वैल्यूज आपको पता है एंड उसके बेसिस में आपको कुछ अननोन वैल्यू फाइंड करना है. दैट इज द आइडिया ऑफ इंटरपोलेशन. इंटरपोलेशन मीन्स you will be given a table of data where you know the value of certain variable at certain place, and using this interpolation method you will be able to find out the value of some unknown variable, okay, of unknown places. Okay, so let me just tell you more about detail. Let us consider the function. हम लोग एक फंक्शन को कंसीडर कर रहे हैं y equals to fx. It may be y equals to x, or y equals to x square, y equal to sin x, y equals to tan x, or y equal to log x. Anything can be possible. And for a set of values of x as, so a table is given to you, so you know the value of the function at some certain values of x. Okay, so let's say x0, x1, x2, x3 dot 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 xn, and the corresponding values of this function at these places is y0, y1, y2, y3 dot 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 yn. Okay, now the method of finding y corresponding to any value of x, any value of x between x0 to x1 xn is known as interpolation. ठीक है, मतलब कुछ कुछ जगह पे आपको वैल्यूज पता है, उसके बेस में एक कुछ नए जगह पे वैल्यू फाइंड करने का तरीका को बोलते हैं इंटरपोलेशन. ठीक है, लाइक लेट्स से वी हैव 1 2 3 4 एंड लेट्स से 10 एंड द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज में भी 5 7 9 11 13 ऐसे करके हैं. सो अगर मैं बोलूं कि वैल्यू फाइंड करो 1.5 का, then this process is known as interpolation. Now we'll be learning two interpolation. One is Newton's forward interpolation, another one is Newton's backward interpolation. So ज़्यादातर आपके एग्जाम में न्यूटन्स की फॉरवर्ड इंटरपोलेशन ही आते हैं. So we'll talk about that, Newton's forward interpolation. Okay, so Newton's forward interpolation formula. I'm just trying to give you everything in brief so that you can understand them quickly before the exam. So it is two types of interpolation formula Newton gave, and these two types of interpolation formula are used to find out the data near the table and towards the end of the table. The process or the formula which is used to find out the value near the table, like where the data is starting, if we are finding the values in this region, then that is called Newton's forward interpolation formula. Now if we find the data at the end of the table, then that is called Newton's backward interpolation formula. Okay, I am fine बलराम, I am fine. अभी थोड़ा सा ठीक हूँ. अभी से आज इस वीक हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे, प्लस क्लास भी हम लोग लेंगे. ठीक है. ओ माय गॉड, मैंने पूरा मिटा दिया. कोई नहीं गाइस, फिर से लिख लेते हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन. ओके,
So it is used to interpolate the value of y near the beginning of a set of tabulated values. I'll just be giving you some I'll just be giving you the formula, and I will just try to do some problem. Okay, so the formula of Newton's forward interpolation formula is given by Pn of x equals to y0 plus u into delta y0 plus u into u minus 1 by 2 factorial delta square y0 plus u into u minus 1 into u minus 2 upon 3 factorial delta cube y0 plus dot 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 plus u into u minus 1 u minus 2 dot 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 u minus n plus 1 divided by n factorial delta to the power n y naught, जहाँ पे where your x is basically x naught plus u into h and xi equals to x naught plus I into h. ठीक है, now let me just tell you as a note that the interval, यहाँ पे जो interval होगा डेटा की, interval between two consecutive values of x should be equal. Got it? ये कौन स्पैम कर रहा है? Is it clear till now, guys? Someone is spamming our class. Anyway, so I'm just leaving you the forward difference table. Okay, so to know about this delta y naught, delta square y naught, delta cube y naught, we need to know about, or you need to formulate the forward difference table. Okay, so I'm just trying to give you the forward difference table. So आपको ये टेबल बनाना पड़ेगा अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर. So what is there in forward difference table? So first of all, the values of x and the corresponding function value will be given. So let's say this is x naught, the corresponding value is y naught, and at x naught plus h is the interval between this value, it is y1. Then let's say x naught plus 2h, the value is y2. X naught plus 3h, the value is y3. X naught plus 4h, the value is y4. Okay, हाँ कीर्ति, हम लोग देखते हैं, जितना हो सकते हैं हम लोग कर लेंगे. ठीक है, वैसे प्लस क्लास में सारे चीज करवाया हूँ, ऑयलर तक करवाया हूँ, ऑयलर फाइनाइट डिफरेंस मेथड सारे चीज करवाया हूँ. इसमें देखते हैं जितना हो सके हम लोग कर लेंगे. सो देखो एक और लिख लेते हैं, x नॉट प्लस 5h y5. So first difference will be delta y naught. Delta y naught will be basically equals to y1 minus y0. इसका और इसका वैल्यू का डिफरेंस होगा और वो होगा डेल्टा y naught. Then y2 minus y1 will be delta y1. This will be delta y2. This will be delta y3, and the difference between them will be delta y4. And let's say delta yn equals to yn plus 1 minus yn. मतलब जो later value है minus previous value, that will be given with the first difference. Okay, this is called first difference. Next we can go for second difference. Second difference will be obtained from these two,
these two, and the corresponding thing will be delta square y0, delta square y1, delta square y2, delta square y3. ओके, ये अरुण कुत्ता के सेकेंड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर दोनों हैं, तो मैंने इंक्लूड किया है यहाँ पे। देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग कर लेंगे उसको, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा बस थ्योरी में बताते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा, उसके बाद प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है ना। सो इफ यू टेक द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स, यू विल गेट अ थर्ड डिफरेंस। ओके, थर्ड डिफरेंस इज गिवन बाय डेल्टा क्यूब y0, ओके, डेल्टा क्यूब y1, delta cube y2, okay, and from this you will be getting the fourth difference. From these two it will be delta to the 4 y0, delta to the 4 y1, and from there you can get the fifth difference, delta 5 y0, and which are required in this table. You know, delta square y0, delta y0, delta cube y0, delta to the power n y0 you need. So you can see mostly the above this one, delta y0, delta square y0, delta cube y0, delta 4 y0, delta 5 y0. So you need to know about these values. So using these values in the Newton's forward difference table, using these values in the Newton's forward interpolation formula, you will be able to find out the values at any places. Okay, so I hope this is clear to everyone. Now we can move forward to some problem. हम लोग प्रॉब्लम की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। So we have a problem, so just write the problem. Given the values sin 45 degree equals to 0.7071, sin 50 degree 0.7660, sin 55 degree 0.8192, and sin 60 degree 0.8660. The approximate value of sin 52। देखो, आपको टेबल जहाँ पे शुरू हो रहा है उसके आसपास की वैल्यू निकालनी है, तो आपको फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और क्वेश्चन में बोल भी दिया है वैसे, कंप्यूटेड बाय न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हो फ्रॉम दिस टॉपिक इज। इसको करो जल्दी जल्दी, 0.804, 0.776, 0.788, 0.798. Take some time and try to solve this question. So just formulate the table. First of all, you have to formulate the difference table. जो ये टेबल है ना, बिकॉज यू नीड टू नो अबाउट डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, डेल्टा क्यूब वाई नॉट, डेल्टा टू फोर वाई नॉट। तो पहले आप वो टेबल बना लो, ठीक है, देन दैट विल बी क्वाइट इजियर फॉर यू। तो यहाँ पे देखो साइन 45, साइन 50, साइन 55, साइन 60, मतलब जो इंटरवल है h वो क्या है, 5 है। एंड यू हैव टू फाइंड आउट 50 डिग्री, 52 डिग्री मीन्स x इज 52। ओके, सो वी नो द फॉर्मूला x इक्वल्स टू x नॉट प्लस u इंटू h। ओके, सो 52 डिग्री इक्वल्स टू 45 degree, x naught equals to 45 plus u into h. Okay, h is 5। so यहाँ से आपका u मिल जाएगा, u equals to how much,
52 minus 45 upon 5. So 7/5. अभी इसके बाद आप टेबल को फॉर्मुलेट कर सकते हो। ऐसे करके टेबल बना लो। यहाँ पे x की वैल्यू होगी, लेट्स से 45, उसके बाद आपको दिया है 50, फिर 55, उसके बाद 60 डिग्री, तो ये x हो गया। y इक्वल्स टू fx भी दे रखा है आपको, सो 0.7071, 0.7660, 0.8192, 0.8660, ये आपको दे रखा है। एंड फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट द फास्ट फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा fx. ओके, डेल्टा fx as I told you the difference between the later value minus previous value. सो इससे इसको आप ये करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0.0589, 0.0532, ये आपको बाय हैंड ही करना पड़ेगा, कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा, और इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, तो आप कर लोगे इसको। डेल्टा स्क्वायर एफएक्स निकालना पड़ेगा, ये वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू दिस, सो इट शुड कम नेगेटिव, minus 0.0057, this will come minus 0.0064, and from the difference of these two things you will get delta cube of fx minus 0.0007. Now nothing is there, so delta to the power 4 fx, delta to the power 5x, and all the higher order terms will not be there, means they are 0. So we have formulated the table. Now we know the formula. Okay, so अभी formula हम लोग बस utilize कर देंगे. So we have to find out sin 50 degree, 52 degree. So f of x equals to f of x naught था, so y naught, उसके बाद क्या था फॉर्मूला में, डेल्टा y naught by 1 factorial into u था, प्लस डेल्टा u into u minus 1, u into u minus 1 by 2 factorial delta square y naught, plus u into u minus 1 u minus 2 upon 3 factorial delta cube y naught, plus dot dot dot. We are not interested in higher order terms because after delta cube everything will become 0. So u naught की वैल्यू क्या है, 0.7071, डेल्टा y naught की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है, which is 0.0589. okay, 0.0589, and u की वैल्यू 7/9 plus 7/9 into 7/9 minus 1/2, डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 0. कितना था, माइनस 0.0057 plus the last term 7/9 है, 7/5 था, 7/5 था यार, सॉरी, 7/5 minus 1, 7/5 minus 2 upon 3 factorial means 3 into 2 means 6, डेल्टा क्यूब का वैल्यू आपको पता है माइनस 0.00007. okay, and all the higher order terms are 0, and this will give you how much. आप लोग चेक करवा लेना, मैं इसको डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, 0.7880, which is matching with option
C. So option C is the correct option. I am just trying to show you how to do it. In your examination, you have to calculate everything with your free hand. So get mentally prepared accordingly. Sir, H5 कैसे? अंकुश H5 कैसे? Because you see, firstly 45 डिग्री का वैल्यू दे रखा है, उसके बाद 50 डिग्री, उसके बाद 55 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री. So what is the difference? The difference is H ना. So this difference is H. That is why let's say 50 equals to the initial value 45 plus जो है H. Got it? और कोई क्वेश्चन है? समझ नहीं आ रहा है महेंद्र? कैलकुलेशन इज लिटिल बिट हार्डर बट द प्रॉब्लम इज वेरी इजी. दैट्स व्हाई कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड काम, बट इतना हार्ड भी नहीं है. देखो बस ऐसे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है ना. बस आपको एक टेबल फॉर्मुलेट करना है. एक्स की वैल्यू दे रखा है, कोरिस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू भी दे रखा है. डेल्टा जो पहला वाला डिफरेंस है वही आपको निकालना पड़ेगा. डेल्टा एफ एक्स, delta square of x, delta cube of x. You see, we just take the difference between this and this. Okay, you just take the difference between this and this. You got these three things. Next, delta square निकालने के लिए इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस. थर्ड केस में इसका और इसका डिफरेंस. देख रहे हो, मतलब ऐसे करके जाएगा. तो एक पर्टिकुलर टाइम पे देखो डेल्टा क्यूब एफ एक्स, इसके बाद कोई टर्म नहीं है डिफरेंस लेने के लिए. तो डेल्टा 4 एफ ऑफ एक्स, डेल्टा 5 एफ ऑफ एक्स, दिस all terms are 0. so only जो आपका फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला, न्यूटन फर्स्ट y नॉट प्लस u इंटू डेल्टा y नॉट, u इंटू u माइनस 1/2 फैक्टोरियल टेस्ट करो y नॉट. सो बाय यूजिंग द टेबल वी फाउंड आउट दिस वैल्यूज, डेल्टा y नॉट, डेल्टा स्क्वायर y नॉट, डेल्टा क्यूब y नॉट. एंड u का वैल्यू कैसे निकालोगे? आप यहाँ से निकालोगे. x इक्वल्स टू x नॉट प्लस uh. x नॉट इज द फर्स्ट डेटा गिवन टू हियर 45 डिग्री. x इज व्हाट, जो वैल्यू आपको निकालना है 52 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री. u आपको निकालना है. h कितना है? डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू 45 है, फिर 50 है, फिर 55 है, 60 है. व्हाट इज द डिफरेंस? 5. सो h इक्वल्स टू 5. एंड फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ u इज 7/5. सो एक बार u निकल गया और डेल्टा u नॉट, डेल्टा स्क्वायर u नॉट, ये सब आप टेबल से निकाल लोगे. बस उसके बाद बिठा दो एक्सप्रेशन में, आंसर निकल जाएगा. आई होप इट इज क्लियर नाउ. सबको क्लियर हो गया? आगे बढ़े. अभी देखो न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं एक बार. Newton backward interpolation formula is used to evaluate the value near the end of the table. Okay, so it is used for interpolating the values of y near the end of a set of tabulated values, or you can also go a little ahead to the right of ym. लाइक मान लो आपको 1 2 3 4 5 ऐसे 10 तक दे रखा है, तो आप ऐसे 7 8 9 पे तो वैल्यू निकाल ही सकते हो. 10 को क्रॉस करके, जहां 10 पे आपका टेबल खत्म हो रहा है, 10 को क्रॉस करके आप 11 हो 12 हो, इस साइड के वैल्यूज में भी आप वैल्यू निकाल सकते हो यूजिंग दिस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला. ओके,
आंसर विल लाई बिटवीन sin 50 एंड sin 55। हाँ वो तो ऑब्वियस है ना। sin 50 और sin 55 के बीच ही लाई करेगा, sin 52 जो होगा। So let me just tell you the formula of this backward interpolation formula. P1 of x this is equals to yn plus u, यहाँ पे ये वाला होगा डेल्टा yn plus u into u plus 1 by 2 factorial. The formula is little bit different. Okay, delta square yn plus u into u plus 1, जहाँ पे माइनस था वहाँ पे प्लस हो जाएगा by 3 factorial delta cube yn plus dot dot dot. So we will just write the nth term u into u plus 1 u plus 2 dot 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 u plus n minus 1 by n factorial delta to the power n yn, जहाँ पे similarly x equals to xn, okay, plus uh होगा, xi equals to xn plus ih होगा, ठीक है। So this is the backward interpolation formula. Now we have to give you the backward difference table, ठीक है। Any question? Should I move forward? आगे बढ़े टेबल की तरफ, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल की तरफ बढ़े। टाइम इज मूविंग वेरी फास्ट, टाइम रिलेटिविस्टिक हो गया है। रिलेटिविस्टिक होना तो और तो डिले हो सकता है। ऐसे क्या हो रहा है? सो हम लोग वो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल दे देते हैं एक बार आपको। बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, okay. So first of all you will have value of x and the corresponding value of y. So as usual x naught corresponding value y naught, x naught plus h is the corresponding value y on, x naught plus 2h. That is why the separation is h. You see x1 x naught से x naught plus h, x naught plus h से x naught plus h plus h, x naught plus 2h. The difference between the values is h. That is why we have taken h. y2, y3, y4, y5. So first difference जो होगा, first difference वो क्या होगा? इन दोनों से आएगा, इन दोनों से आएगा, इन दोनों से आएगा, इन दोनों से आएगा, इन दोनों से आएगा। Okay. Now the formula is little bit changed. Delta y1 this is equals to y1 minus y0. Okay. So delta y1. The table is same. You can see the table is same. Here we were taking the above values in the Newton forward difference table. Okay. But यहाँ पे देखो नीचे वाला वैल्यू लेना। You have to take the bottom value. Okay. ये आपका फर्स्ट डिफरेंस हो गया। अभी सेकंड डिफरेंस कहाँ से मिलेगा? इन दोनों से मिलेगा, इन दोनों से, इन दोनों से, इन दोनों से। ये आपका डेल्टा स्क्वायर हाउ मच? y2 y1 से क्या मिल जाएगा आपको? सो देखो y1 y0 से y1 मिला था, y2 y1 से y2 मिला था। सो y2 y1 से क्या मिल जाएगा? डेल्टा स्क्वायर y2, फिर डेल्टा स्क्वायर y3, डेल्टा स्क्वायर y4, ओके, and delta square y5. This is the second difference. Third difference you will get from here, from here, from here. So you will get delta cube y3, delta cube y4, delta cube y5. थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो अगर नए सीख रहे हो तो उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आप लोगों को, बट इट्स वेरी इजी। डेल्टा टू द पावर 4 y4, डेल्टा टू द पावर 4 y5।
फिफ्थ डिफरेंस इन दोनों से मिलेगा, डेल्टा टू द पावर 5 वाई 5। ओके, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। डेल्टा स्क्वायर वाई 5 मतलब डेल्टा वाई 5 माइनस डेल्टा वाई 4। ओके, जैसे डेल्टा टू द पावर 5 वाई 5 इज डेल्टा टू द पावर 4 वाई 5 minus delta to the power 4 y 4. In this way this table is formulated. Okay, so Newton's backward interpolation formula is used to evaluate the values near the end of the tabulated values, or you can go out of the table also. Like if you are given the values like this 1 2 3 4 5 6 तक दे रखा है, तो आप इसका कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू कुछ भी दे रखा है आपको, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज लाइक एट 4 एट 5 एंड इवन एट लाइक बियॉन्ड 6 using this backward interpolation formula. This is the formula yn plus y delta u delta yn plus u into u plus 1 by 2 factorial delta square yn and go on, and where x equals to xn plus uh and x equals to xn plus ih. So in this way you can find out, and the values of deltas can be found out from the backward difference table. ओके, तो ये उतना अभी एग्जाम में नहीं आया है, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन भी आया है आपके एग्जाम में, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ इसके ऊपर। सो दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ टेबल। सो इन द टेबल ईयर इज गिवन x, ओके, एंड population is given, okay, population it is given y and in thousands, okay, इसका जो यूनिट है थाउजेंड्स में दे रखा है। सो ईयर 1891, फिर 1901, 1911, 1921, फिर 1931, and the population is 46,000, 66,000, 81,000, 93,000, 100 and 1,000। ओके, सो 1891 से 1901 10 साल का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 10 है। सो व्हाट वाज द पॉपुलेशन इन द ईयर 1925, ठीक है, what was the population in the year 1925? तो देखो 1925 इस दोनों वैल्यू के बीच में आ रहा है एंड एट द एंड ऑफ द टेबल। सो यू कैन यूज Newton's backward interpolation formula to find out the population in the year 1995, and you are given 4 options. 94, this is in thousands, okay, 94,000, 95,000, 96,000, 97,000। ओके, कितना होगा? एनी आइडिया? वैल्यू देख के बता सकते हो कितना हो सकता है 1925 में? 96 वही पे धोखा खा गए। 96 और देखो 97 भी ऑप्शन में है ना, तो अगर आपको 96.8 96.7 आ रहा है तो यू हैव टू टेक 97। नो ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, यू कैन सी 94 95 96 97, so you may get confused in the value, so you have to solve it। तो एक काम करो, इसको एज ए होमवर्क ले लो, टेक इट एज होमवर्क। द करेक्ट आंसर विल बी 96.874, so that is approximately 97। आंसर विल बी डी। सो आप लोग चेक कर लेना, जैसे मैं
I have provided you the difference table, the formula also. So you just do it accordingly and you will get this. So here I'm just giving you some hint. I'm just giving you some hint. The hint is like this. So you have to find out x 1925. ठीक है, xn जो है आपका 1931, the last value xn 1931. So u क्या निकल जाएगा, x minus xn upon h. So 1925 minus 1931 divided by h is 10. The difference between the consecutive years is 10. So this will give you minus 3 by 5. Okay. Now to find out the value of y at 1925, you need to know about this difference table, and once you know the difference table, you know the value of yn, you know the value of y. So first you have to find out this delta yn, delta square yn, delta q yn, and using in this form and putting those values in this formula, you will get the answer, and the answer will be 96.874. आप लोग इसको चेक कर लेना, just take it as homework. Okay. Now one thing I would like to tell you, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन. बहुत सारा टेक्निक्स है, हम लोग क्या करें क्या छोड़े. सो ये वाला बता देते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में. ठीक है राहुल, कैलकुलेशन देखो उतना टफ नहीं दिया जाएगा, जितना कैलकुलेशन आपको दे रखा होगा आप कर पाओगे. मतलब ऐसा नहीं, CSIR वाले भी उतना इनह्यूमन नहीं है. मतलब अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होंगे आपकी इस प्रॉब्लम में, तो वो आपको एज ए हिंट क्वेश्चन में दिया जाएगा. अदरवाइज द कैलकुलेशन विल रिमेन इजी. अभी हम लोगों को प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है, तो अभी प्रैक्टिस के लिए आप कैलकुलेटर यूज कर लो. बट एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा, और उतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन भी नहीं होगा कि एकदम कैलकुलेटर के बिना नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं दिया जाएगा. इजी कैलकुलेशंस दिया जाएगा. बस आपको ये जो प्रोसेस है, जो आपका टेक्निक्स है, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए एंड द फॉर्मूला. ठीक है, डोंट वरी अबाउट द कैलकुलेशन, यू कैन डू इट. सो लेट मी जस्ट टेल यू, इफ I ask you to evaluate this integration, okay, like x naught to let's say xn f of x dx. okay, so इसको सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करोगे? So you just divide the given integral from x naught to xn into, क्या करो, इसको डिवाइड कर दो जो आपका इंटरवल दे रखा है, into n number of सब इंटरवल्स, n number of सब इंटरवल्स of equal width h. h इक्वल विथ में कैसे डिवाइड करोगे? लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इंटरवल्स, दैट विल गिव यू द विड्थ ऑफ वन इंटरवल. ओके, सो अकॉर्डिंगली वी कैन फॉर्मुलेट ए टेबल लाइक दिस. ओके, आप लोग ऐसे एक टेबल बना सकते हो. So you can write value of x here, value of f of x. f of x is the integrand. Okay, integrand की value लिख सकते हो. So let's say x naught, then x1, x2, ऐसे करके आप कितने देर तक जाओगे? xn तक जाओगे. Corresponding value you can usually find out y0, y1, y2, dot 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 yn. Okay. Now once you make this table, you can now evaluate the integration using different techniques. There are a lot of techniques: trapezoidal rule, Simpson's one-third rule, Simpson's 3/8 rule, and each technique has its corresponding error. So we will not go much into that thing. I will just give you the definition. I will just give you the statement which will be helpful to solve the problem. So firstly, we will consider trapezoidal rule. Okay.
and this rule is valid for applicable for this is applicable for any value of n. What is n? n is the number of intervals. मतलब अगर आपको मान लो 1 to 10 आपका लिमिट दे रखा है 1 to 10, आप इसको 10 हिस्सों में बांट सकते हो, देन एक एक हिस्सा कितना होगा 1 यूनिट होगा 1. आप इसको 5 हिस्से में बांट सकते हो, व्हाट विल बी द h इक्वल इंटरवल कितना होगा 2 होगा. ठीक है. सो दिस ट्रॉपिजॉइडल रूल इज एप्लीकेबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ n. कुछ रूल होता है जहाँ पे यू मस्ट हैव इवन वैल्यू ऑफ n, लाइक द टोटल इंटरवल जो होगा वो इवन होना चाहिए, ऐसा होता है. सिम्पसन में होता है. अभी ट्रैपेजॉइडल में देयर इज नो बैरियर लाइक दैट, इट इज वैलिड फॉर एनी वैल्यू ऑफ n. ओके, सो यू कैन डिवाइड द इंटरवल इनटू एनी नंबर ऑफ वैल्यूज. ओके, so according to trapezoidal rule you can evaluate this integration x naught to xn f of x dx using this h by 2 y0 plus yn plus 2 into y1 plus y2 plus y3 plus dot 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 plus yn minus 1. Okay, so this is the trapezoidal rule. H is what? H is the interval, as we have already found out. H equals to xn minus x naught by n. Okay, and other things you know, y0, y1, y2 you can evaluate on the table. Now यहाँ पे जो error है उसका बस मैं formula लिख देता हूँ. What is the error? So these methods are not exact method. Numerical methods are approximate methods. We get only approximate result using this numerical techniques. Remember this thing. So there must be some error in every technique. So sometimes you need to know about these errors. So the error in the estimation of the integration by trapezoidal rule satisfies E trapezoidal is less equals to kt upon 12n square xn minus x0 cube. जहाँ पे जो kt है, kt is the upper bound value of f double prime x for x0 less equals to x less equals to x. So ये चीज एरर वाला चीज आपको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है. I'm just providing it for the sake of completeness. ये एग्जाम में आता नहीं है. बेसिकली यू नीड टू यूटिलाइज दिस फॉर्मूला ओनली. ओके, सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ प्रॉब्लम. सो ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग योर trapezoidal rule. Okay, so there is a problem question. Write the question. So given you are given a table, value of x is given, value of f of x is given. So value of x is -1 0 1 2 3 and value of f is -1 5 3 1 23 जैसा लग रहा है. इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लूँ. सो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है इसके वैल्यू. सो यू हैव टू इवैल्यूएट -1 2 3 f of x dx यूजिंग ट्रापेजॉइडल रूल. इसको जल्दी जल्दी कर लो ट्रापेजॉइडल रूल यूज करके और बताओ मुझे कौन सा आंसर है. ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 30. इसको करो जल्दी जल्दी और बताओ कौन सा आंसर मिल रहा है.
क्विक गाइस, क्विक, टाइम ओवर आ चुका है। So it's like your y0, y1, y2, y3, y4। डिफरेंस देखो, h का वैल्यू 1 है। क्या आंसर मिल रहा है गाइस? h का वैल्यू कितना है? 1 है। h/2 इंटू y0 प्लस yn क्या है? 4 है। y0, y1, y2, y3, y4 प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3। यही तो होगा फॉर्मूला। कितना आंसर आ रहा है? y0 -1, y4 5, y1 5, y2 3, y3 1। यहाँ से आ रहा है 4, वहाँ से आ रहा है 18, 11। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? जस्ट राइट वाई इफ इट इज क्लियर। 12 आ रहा है ना, 11 आ रहा है ना? सो गाइज आज तो टाइम खत्म हो गया है। सो यू कैन ज्वाइन Unacademy Plus. There are a lot of benefits of taking Unacademy Plus. So you see, you get a daily live class, part and full length test, assignment with detailed solutions, proper structured course, whole syllabus is covered, detailed doubt clearing session at the end of the lectures. So just take Unacademy Plus subscription using our referral code PhysicsHub. Unacademy will offer 10% off, and this is a kind of fee structure on Unacademy. You can take any of the plan: 1 month, 3 months, 6 month, 12 month, 24 month. So this is the normal price, and if you apply our referral code PhysicsHub, you get it 10% off on overall fees. ठीक है? So take Unacademy Plus subscription and join my classes. So see you in the next class, guys. Bye bye. Thank you very much for joining the session today. Take care. Bye bye. H equals to b minus a by n. How to take n value? H equals to b minus a by n. This is given now. If you are given the table, so you know the value of n. If table is not given, you will be given the value of n. कोई भी चीज देना पड़ेगा। मतलब in this question the table is given, so there is no requirement to give you the value of n. If the table is not given, then you will be given the value of n, like take the value of n to be in this। ठीक है, चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ मेथड अभी भी बाकी रह गया, तो हम लोग उसको बाद में कहीं और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो क्लास स्टूडेंट है वो तो देख ही सकते हो, क्लास में मैं कराया हूँ ये पूरा 3 लेक्चर लिया था, इसका भी एक लेक्चर में थोड़ी होगा सारी चीज़।